Hi, I'm Dinesh and I'm a final year pharmacy student at Keele and I'm doing a campus tour today. Okay, brilliant, let's get started. Okay, so this is Chancellor's Building. It's got one of our main university receptions in it. It's also where our main restaurant called the Refectory is based, in the food court right here. So in the food court we have street food, Monday to Friday. We have food from different places, different cultures, and the refectory inside serves hot meals Monday to Friday. Serves a really good English breakfast in the morning. I'd really recommend it. It's also where our language learning unit is based. So on that side of Chancellor's is where our language learning unit is based. So every student at Keele has an opportunity to study a language as part of their electives or as an additional course. We've got things starting from level 1 up to level 10, things like French, Spanish, German, Mandarin, and etc. So that's a really good option the students can take when they're at Keele. It's also where Westminster Theatre is based. It's our biggest theatre on campus, is around the back, and that's where we have our big events, talks, lectures sometimes, just outside for students to use as part of clubs or in their own spare time. Inside the sports centre we've got a gym on the first floor that students can use with student discount, and then within the sports centre we've got 2 sports halls. We've got a gymnasium, we've even got hairdressers, we've got squash courts and 2 large sports halls as well as a bouldering wall. So there's a range of facilities that students can use. Whether you were in sports before you came to Keele or you want to get into new sports when you come to Keele, I'd really recommend getting involved in sports to make friends, to keep fit or to try something new. You don't need to be good at a sport to try a sport. If you just want to try it, just play casually or just play for fun, then you can do that. Or if you want to play competitively, if you've played before you came to university, then you can join the team. You can play against other universities, something called Bucks, which is a British university wide league, or you can play in our varsity competition every year. So every year we have a competition between Staffordshire University and Keele University across a range of different sports, and you can represent Team Keele and represent them to victory against staffs every year as well. So it's up to you how much you want to get involved. Sports clubs usually have socials. We've got clubs such as a swimming club and equestrian club usually take you to the facilities off-site on minibuses that they use. So even if the facilities are off-site, they'll take you to them as well. Okay, so we'll go off to the centre of campus now and tell you about the facilities on campus. Okay, so here we are at Tawny Building, which is our Student Services Centre at Keele. This basically houses all of the main student support and dyslexia team, so if you've got any additional needs, then they can cater for them really well, and they can let them know so they can alert your school. So it's like a one-stop shop for anything, basically. Brilliant. Okay, we'll head to the centre of campus then. Okay, so here we are in Central Union Square, where we have the Forest of Light, and it's called the Forest of Light because it does glow in the dark, actually. And it represents 50 years of Keele becoming a university. So Keele became a university in 1962, and this was built in 2012 to celebrate that 50 years moment. And this whole square was redeveloped at that point to make like a central hub for students to gather and to be with friends and to have charity bakes and all sorts of things. And the bottom floor of the SU was also redeveloped at the same time as this was redeveloped. So around Union Square, even though the campus is huge, we've got over 600 acres of land. Everything's quite centralised. So for example, you can see that we've got all of our sort of shops and facilities right in the centre of campus. So because we're a couple of miles away from Newcastle-on-the-Lyme, which is our local town centre, we've got a few shops on campus. We've got Martin, which is like a corner type shop with a post office in there as well. We've got a Costa Coffee for any of your caffeine needs. We've got Blackwell's next door, which is like a bookshop for any sort of textbooks you want to buy. Pharmacy, which was only opened a couple of years ago. And we also have a medical centre, which is based in Horwood Hall, which is behind the SU, and wraps and all sorts of food from there. So there's loads of places to eat and get coffee on campus. Behind us, we've got the chapel, which is a really nice place to be in on campus. It's where we graduate at the end of our degree at Keele. We have our official ceremony, and it's also where the chaplaincy team is based. So we have services on a weekly basis, and the Christian Union is based there, and all the other associated societies.
A really cool thing that the Education Union does is that after big events in the SU, they host free tea and toast after nights out. So you see a stream of people just heading to the chapel for free tea and toast before they head back to their halls. So that's quite a sort of tells you about the community spirit here at Keele and how people just look out for each other and give us free tea and toast. So that's quite a nice facility to have right on campus. Otherwise, all the academic buildings are around this sort of university drive. So all the main academic buildings are here, with some others scattered on the outskirts, and obviously the nurse midwifery school based in Rawstoke Hospital. Okay, we'll head over to the library right over there. Okay, so this is our main university library. We also have another library in the Rawstoke Hospital for our midwifery and nursing students, which is not open 24/7, but this library is actually open 24/7 during term time, which is a really good facility to have. You can come and study there whenever you want, in the middle of the night, whenever you're free, which is quite a really good service to have. It's based over 3 floors. So the middle floor is mostly group study areas. It's got group study rooms they can book out for group projects, group presentations. It's got an IT suite they can use all day, all night during term time. We've got a careers and employability team based on that floor as well, which is really useful if you're looking for internships, part-time jobs, CV help, interview help, and everything else associated with careers. That's a really good useful service to use. Next door to the careers on the middle floor, we also have the IT support desk, and that's basically, you can use that for any sort of IT issues, or if you have issues with connecting to the internet, because we've got Wi-Fi all across campus, or if you want to hook your laptop up to the network, or even you want to install a games console into the network as well if you're going into halls. And also have like a laptop loan service. So if you want to loan a laptop for the day, you can get a laptop from them for free. Or if you want to loan it for longer than a day, then you pay a small fee, but it's not too much. Then on the top floor, we've got all books and e-journals. That takes you right to the edge of campus. So if you're a runner or if you want to just go for a walk, that's a really nice walk to go down. It tells you about the amount of green space that we have on campus around the walking space. And this is also sandstone, so it wasn't going to last until this time. During the Second World War, but nowadays, because as the campus has expanded, Society or Geography and Geoscience Society. I have the end of year balls here at Keele Hall around May, June time to celebrate end of exams and get everyone together and have a 3-course meal. And also this is always the woodlands and explore the woodlands, and you feel like you're in a gate in the first place. And now it's still repainted and exists today, and people traditionally take photos when they start Keele and when they finish Keele, or when they do the dissertations. Here we are at Keele SU. So Keele SU is run by students for students. It provides a range of different activities, entertainment, welfare, food in the day. It's got pool tables. We've got loads of informal study that societies can book onto. So the venues like the ballroom and K2 are used during the night for nights out and some nights, but they can also be used during the day by societies like Dance Society or Bollywood. Nearly 200 societies and sports clubs that you can hear, and you can get people to join that society as well. Another thing to mention is also Keele SU is also got a volunteering team. So there's a wide array of volunteering that counts towards your volunteering hours. So whether that's been on a committee of a society, whether that's volunteering for local charities, or doing volunteering right on campus, you can work towards a volunteering award to start off with bronze at 25 hours, and you can work up to जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा, आपने कील यूनिवर्सिटी का हमने आपको टूर करवाया। यूके की सबसे बड़ी कैंपस 600 एकड़ पे, और इतनी बड़ी कैंपस मैंने आज तक यूके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है लाहौर से, जो if उसका मुझे टेक्स्ट आया, लेट हर टू कम इन। हेलो आयशा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आपका कैमरा नहीं आ रहा जी। अभी आया हूँ। ये आयशा है लाहौर से।
ये हमारे साथ। हेलो जी एवरीवन। आयशा, आपने कील यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ देखा, वीडियो देखा? कैसी लगी आपको कील जी सर। यूनिवर्सिटी? जी सर, बिल्कुल मैं आपकी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी इस वक्त ही, तो मैंने उसकी काफ़ी स्पेसिफिकेशंस देखी हैं कील्स यूनिवर्सिटी की। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत मैंने देखा है कि इसका यूके कैंपस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट रेंज में मतलब स्प्रेड आउट हुआ है। यानी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस मतलब मुश्किल से पॉसिबल होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरती से जो उसे बनाया गया और स्टूडेंट्स की स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। So I want to get admission in Keele's University, आपकी UK एजुकेशन क्या campus. है आयशा? आपने क्या एजुकेशन, पाकिस्तान से कोई प्रीवियस एजुकेशन है आपकी? Yes sir, मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है पाकिस्तान से। इंटर किस कंप्लीट हो चुका है किस मेरा, साल तो में मैं आपने आगे की है? BSc। कब कंप्लीट की है? जी। एफएससी आपने कब की 2009 है? 2019 में मैंने अपनी FSC कंप्लीट की थी और इसके बाद मैं BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहती हूँ। बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बीएससी अकाउंटिंग यस एंड सर। फाइनेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है यूके में। यहाँ पे हर ओके। इंसान को अकाउंटेंट चाहिए होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या जॉब ना कर रहा हो। अगर गवर्नमेंट से भी वो कोई बेनिफिट्स ले रहा है तो उसको भी अकाउंटेंट चाहिए होता है कि वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करे और गवर्नमेंट को उसके पैसों का हिसाब दे। तो ऐसे में जी बिल्कुल सर। आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चूज किया है कि आप अकाउंटेंट बने, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बने, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करें और यस सर। वापस पाकिस्तान में जाके एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह सर्व करें। पाकिस्तान में यस सर, प्रोफेशनल क्योंकि मतलब अकाउंटेंट्स की बड़ी कमी पाकिस्तान है। में भी। जी सर, पाकिस्तान में अकाउंटेंट्स की भी कमी है और इसके अलावा मतलब डिग्री के साथ साथ स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों के पास डिग्रीज तो होती हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती, जो एक मेन बात है ना कि लोगों के पास स्किल्स का बहुत लैक है पाकिस्तान में। डिग्रीज तो मतलब मिल ही जाती हैं, एक बंदे की बात होती है, उसके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। तो जो कील्स यूनिवर्सिटी है उसके बारे में मैंने उनकी वेबसाइट पे भी सर्च किया है, तो काफ़ी मतलब उनके स्टूडेंट्स जो हैं टैलेंटेड टाइप के हैं। काफ़ी प्रैक्टिकली वो स्टूडेंट्स को वर्कआउट करवाते हैं ताकि वो बाहर इन फ्यूचर सोसाइटी में जाके सरवाइव कर सकें। आपने तो शायद, आप क्योंकि आप यूके पहले आई नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। यूके में छोटे छोटे कैंपस होते हैं, कुछ 4 कमरों का, कोई 5 कमरों का, कुछ 6 कमरों के कैंपस भी होते हैं यूनिवर्सिटियों के। ये 600 सही। एकड़ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 600 यस सर, एकड़ ये बहुत बहुत बड़ी जगह बात है होती है। मतलब कि जी यूके के अंदर और जाहिर है कि इसमें एक्सपेंसिव एरिया है तो 2800 उसमें। कमरों का हॉस्टल है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2800 कमरों का हॉस्टल है और इसके अंदर मैरियट होटल का भी, इसमें होटल भी है, 5 स्टार होटल भी इसके अंदर है। यूनिवर्सिटी के अंदर 5 स्टार होटल है और लंदन से एक जी सर, घंटे ये की तो ड्राइव मतलब पे। बहुत ही सही। और जी इसके सर, अलावा मतलब मैं इसका वाकई मतलब लाइब्रेरी आपने देखी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसका कैंपस 600 एकड़ का है और इसमें ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड के तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट यस सेटिस्फेक्शन सर। पे इसको अवार्ड मिला, 3rd नंबर पे है। जी टॉप और रैंकिंग में इसमें 3rd नंबर पे है मतलब कील्स और यूनिवर्सिटी। इसमें और टीचिंग एक्सीलेंस में ये गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी है, कील यूनिवर्सिटी। कील यूनिवर्सिटी जो है टीचिंग एक्सीलेंस में ये गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी है और ये स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में ये 3rd नंबर पे है इंग्लैंड में। और यूके का सबसे बड़ा कैंपस 600 एकड़ में, कील यूनिवर्सिटी। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल इसमें सर। आप अकाउंटेंसी, स्टूडेंट्स इसमें अकाउंटेंसी कर सकते हैं, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज ले सकते हैं, इसमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें फार्मेसी ले सकते हैं, इसमें डॉक्टर बन सकते हैं। बेइंतहा वाइड रेंज है कोर्सेज की जो एक मुकम्मल यूनिवर्सिटीज में होती है। जी सर सही। तो नहीं सर, इसमें मतलब मैं तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इससे। तो मैं बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगी यहाँ पे। चले आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे, आपने हमारे स्टूडियो में थैंक अपना यू। नंबर रिकॉर्ड करवा दें। आप, हमारा जो है स्टाफ जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस सर शहर मैं में बेसिकली रहती हैं? लाहौर से बिलोंग करती हूँ। हाँ, लाहौर लाहौर। में हमारे 5 ऑफिस हैं। हाँ, मैं अपने ऑफिस को कहूँगा कि वो लाहौर में आपको कांटेक्ट कर लें और आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इसमें
इसमें हमारे ये नंबर भी नीचे होंगे इसके, और अगर ना भी हो तो आप www.study.global पे विजिट करेंगी तो आपको हमारे सारे ऑफिस की लोकेशन भी पता चल जाएगी। आप वहां से आप अपना एडमिशन में अप्लाई कर ओके सकती सर। हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। सर इंशाल्लाह फिर किसी और लाइव एपिसोड में आपको मैं लाइव लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वेलकम सर। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, कील यूनिवर्सिटी यूके की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो कील यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लैंड में टॉप 3rd नंबर पे आती है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में इंग्लैंड में टॉप 3rd है। यूके में गोल्ड रेटेड टीचिंग एक्सीलेंस में इसको गोल्ड रेटेड अवार्ड दिया गया है, और यूके की सबसे बड़ी 600 एकड़ पे इस पे ये यूनिवर्सिटी है। इसका सिंगल साइटेड सबसे बड़ा यूके में कैंपस है। आप समझे कि कील यूनिवर्सिटी से बड़ा यूके में कोई और कैंपस नहीं है, और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें यह है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आइट्स लाजमी करना पड़ेगा। हमारे स्टडी ग्लोबल के लोकल ऑफिस पाकिस्तान में, लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्टडी ग्लोबल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.study.global। हम कील यूनिवर्सिटी जो है ऑफिशियल पार्टनर है, और इसका हमारे साथ पार्टनरशिप है स्टडी ग्लोबल की कील यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान से स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं कील यूनिवर्सिटी के लिए। आइए, अगर आपको भी इसमें हेल्प की ज़रूरत हो, आपको इसमें सपोर्ट की ज़रूरत हो कि आपने कील यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है, तो हमारे लोकल ऑफिस से बात करें, वो आपके लिए, हमारा स्टाफ जो है आपकी रहनुमाई कर देगा। जी, इंशाल्लाह ये इस सैटरडे का, इस संडे का, इस वीकेंड का आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, जो यूके में आके पढ़ना चाहते हैं। और जब आपने यूके में आना है, आपने इतने पैसे लगाने हैं, तो आपको पहली चॉइस ये होनी चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, अच्छा कोर्स चूज़ करें जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, आपके माइंड के मुताबिक है, आपके दिल के मुताबिक है, आपकी चॉइस के मुताबिक है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, और वो आपको रिलेट कर रहा हो आपके प्रीवियस एजुकेशन पे और आपके फ्यूचर प्लान पे। ऐसा कोर्स चूज़ करें, और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में देखें कि वो किस यूनिवर्सिटी में है। और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आज इस वीकेंड पे हम आपके लिए लेके आए हैं, कील यूनिवर्सिटी। कील यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लैंड में टॉप 3rd पे है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में, और यूके में ये टीचिंग एक्सीलेंस में इसको गोल्ड रेटेड अवार्ड दिया गया है। इसका कैंपस 600 एकड़ से ज्यादा का कैंपस है, जो सिंगल साइटेड यूके में सबसे बड़ा कैंपस है। इससे बड़ा कैंपस यूके में और कोई नहीं है। और अगर आपके पास सिर्फ 2000 पाउंड है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा के एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, बाकी फीस जो है। और इसमें आपको आइट्स करना पड़ेगा। आइट्स करके, और किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो हमारा ऑफिस, हमारा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में ऑफिस है, वो आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, किसी और आपको स्टूडेंट्स स्टडी हेल्प के लिए, किसी और अगर कोई अपडेट्स नहीं आती हैं उसके लिए हम मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। आप, और एक और बात, इस वक्त दुनिया में
अगर आपने इंटरनेशनल स्टडी करनी है, आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, किसी और मुल्क से यूके में आके पढ़ना है, जहाँ किसी और मुल्क में पढ़ने के लिए जाना है, तो इस वक़्त सिर्फ यूके ही ओपन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका स्टूडेंट्स के लिए इस साल बंद है। वो मे बी नेक्स्ट ईयर से शुरू करें स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट। आपके लिए इस वक़्त एक ही ऑप्शन है, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर आपने यूके आना है तो हमारे लोकल ऑफिसर से कांटेक्ट करें, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया और आप सबको अल्लाह ताला आप सबको कोरोना के मर्ज़ से महफूज़ रखे, पाकिस्तान को तरक्की दे। हमारी ये दुआएँ हैं। पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए हम हर वक़्त हाज़िर हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है कि हम पाकिस्तानी नौजवानों को गाइड करें कि आप बाहर के ममालिक में आएँ, आला तालीम हासिल करें, यहाँ का नॉलेज लें, यहाँ का एक्सपीरियंस लें, यहाँ की स्किल्स लें और फिर पाकिस्तान में जाके सर्व करें। आप लोगों को आज का ये वीकेंड मुबारक हो। आज का ये वीकेंड कील यूनिवर्सिटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।